Yes, good morning. So I think in last lecture we have started with this design of industrial truss, and we have completed the calculation for the dead load and for the live load. Is it? Yes, ma'am. Right. So both this calculation is done, and I think we have started with the equations that we require to use for the calculation of wind load. Yes. Right. So this one is the IS 875 part 3, where you can get the uh, design criteria for the design of wind load acting on the truss. So I have shown you the different equations also. For that you can get the value of wind load acting on each and every panel point or the node point of the truss. So we will going to start with calculation of wind load analysis on the roof truss. So very first requirement for the calculation part is to find the, I mean to use this equation, and this equation is nothing but the wind load on individual members. So for each and every member or at each and every node, what will be the wind load acting, right? So for that you require to use this equation. Now this equation is very simple, force equation. Force is equal to stress into area. So here stress is PD, that is the wind pressure. Stress in terms of pressure, so that is wind pressure or design wind pressure. A is the area on which this wind load is acting, and this is the coefficient CPE and CPI, right? So this will form your equation of wind load. F is equal to CPE minus CPI into A into PD. Now I have shown you that how to find this PD. So this PD you can get from this equation. This PD is equal to 0.6 Vz square. Right. Now here how to find this Vz. So for this Vz you require to use the third equation, and that equation is Vz is equal to, yes, this is VB into K1 into K2 into K3 into K4. I think I have discussed this each and every point also, K1, K2, K3, K4, how to get this value. Yes. डिस्कस किया है ना हमने, हाउ टू फाइंड K1, K2, K3, K4, Yes, ma'am. right? And VB is the basic wind speed of the city where you are going to design or where you are going to construct your truss. So from this you can find the VZ. So from VZ you can find this PZ, right? And you can put this PZ value over here. So this part is over, this PD you can easily find. Now coming to this area. Now this area is the sloping area of truss. Sloping area of truss. So if you remember, for the dead load and live load we have used the, for dead load and live load we have used the area, and that area is the plan area, 0.75 plan area, right? So we have considered the plan area. Same way for dead load and live load both, but for the wind load, as wind is acting perpendicular to your node. Suppose this is your slope of roof truss and these are the nodes, right? So this wind load, this dead load and live load will act perpendicular, downward direction, but this wind load is acting perpendicular to the slope, means the area you required is the sloping area, right? For truss you require the slope area. Over here this slope area you require, right? So for that you require to find the slope of this member, and that slope into the spacing of the roof will give the area, sloping area. So by this you can get the area, right? So here you will get area also very easily.
this area. Now coming to CPE and CPI. So CP is the external pressure coefficient and CPI is the internal pressure coefficient. So this CP and CPI also you can get from this code, right? So this CP value, that is external value, you can get from this table number 6, CPE value. And CPI value is depend on the how much opening is provided in your truss. So if your opening is about 5%, then CPI is plus 2.2 and minus 0.2. If your building opening is medium to large, that means the opening is 5 to 20%, then CPI is plus or minus 0.5. And if the building have large opening around more than 20%, then the CPE and CPI will be over here, plus or minus 0.7, right? So how much the opening is provided in the building or in the structure, depend on that this CPI value will varies. Is it clear everyone? Yes. Right, so 5% हो तो plus or minus 0.2, then 5 to 20%, then plus or minus 0.5, and more than 20%, then plus or minus 0.7, right? And external pressure coefficient you can get from this table number 6, depend on H by W ratio of your truss. Now what is H? H is the height of truss. Over here H, see the figure is also given. H is the height of the truss from the ground surface, and this W is nothing but the span of the truss, right? And here is the roof angle. So you never know that wind is acting in 90 degree or 0 degree, in terms of if this is your truss, suppose this is your truss, right? So 90 degree means that the force is acting in this direction, wind force, right? So wind force, sorry, 0 degree, then wind force is acting in this direction, and 90 degree means wind force is acting in this direction, right? So see the plan area is key plan is also given. This W is the spacing of your roof truss. This is the W, right? And here 4 part is given, F, H, G, H. So if the wind load is acting in this direction, then this is known as windward direction. This is known as windward direction, and opposite to that is known as leeward direction, right? So if this is the wind direction, then this part of is windward part, and opposite is, this is the leeward part. And if your wind is from this direction, wind load is from this direction, then this will be the windward and this will be the leeward direction. Means GH will be the windward direction, EF will be the leeward direction. Is it clear everyone? Yes. राइट, तो ऐसे है, अगर ये डायरेक्शन में फोर्स है तो ये पोर्शन जो है पूरा वो विंडवर्ड है और ऑपोजिट होगा वो लीवर्ड होगा, वैसे वाइस वर्सा. नाउ हियर इफ यू कैन सी हियर दिस थीटा एंगल इज गिवन. सो इफ दिस theta angle is 0 degree, if your theta angle is 0 degree, right, then EF and GH, this will be the force of leeward and windward. अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मतलब ऐसे होगा, यहाँ पे फोर्स. 0 डिग्री मतलब ये डायरेक्शन में, 90 डिग्री फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा EG एंड FH. तो EG मतलब EG will be the leeward direction, sorry windward direction, and FH will be the leeward direction. तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है EG एंड FH. और अगर 0 डिग्री है तो EF हमारा विंडवर्ड होगा
और GH हमारा लीवर्ड होगा। तो देखो EF and GH. Clear everyone? This table number 6. Yes. Right. So you never know that what will be the wind direction at the time of wind load. So you require to design your, or you require to analyze your truss for all this load. All this load means theta is equal to 0 degree, or for 0 degree also you require to do for the wind direction or windward direction. Short form is wind, WWD, windward direction, and you require to do the calculation for leeward direction also. Same way you require to consider theta is equal to 90 degree. Again for 90 degree also windward direction, and again leeward direction. Then at last from this all value you require to take the critical value in terms of that if the theta angle is 0 degree, then from windward and leeward whatever will be the maximum value that we require to consider for the analysis purpose, and for theta is equal to 90 degree. Sorry, for here what you require to do is for the critical calculation for theta is equal to 0 degree and theta is equal to 90 degree. Theta is equal to 90 degree. From this calculation, whichever is the maximum windward direction that we require to take from this, and for both these condition whatever is the maximum leeward direction value that we require to consider. So ultimately we will get the two value. One is the windward, this will be a perpendicular, so one will be the windward direction force and other will be the leeward direction force. Clear everyone? Yes, ma'am. So if we Yes. consider maximum value, then whether the direction of force is 0 degree or 90 degree, that will survive, right? So that way we will get the one value, one for leeward and one for windward, right? So this is the calculation we require to do. So we are starting with that calculation only from this. Now very first requirement for the wind load calculation is this equation. So what is our equation? F is equal to CPE minus CPI. So these are the coefficient into A into PD. Chalo. So one by one we will find all the unknowns, and from that we can get the value of force. Right. So very first we will find is PD, that is design wind pressure. PD is nothing but design wind pressure. PD. Chalo, what is equation for PD? 0.6 V2 square. VZ square. V2 नहीं है, VZ, राइट. एंड क्लोज नंबर कोई मुझे बता दो. इट इज क्लोज नंबर 7.2. क्लोज नंबर 7.2. IS 875 part 3. Right. So very first we required is VZ. Now what is VZ? Design wind speed. Design wind speed VZ. Chalo, what is equation for VZ?
What is equation for Vz? Vz is equal to चलो कोड ओपन करके मुझे बोलो. Clause number 6.3 VB clause 6.3. ठीक है everyone? Yes. चलो now we will going to find each and every value. Now coming to first VB. What is basic wind speed of our truss? वो हमने आगे हमने देखा हुआ. What is, see over here the basic wind speed is given 50 meter per second. If it is not given, then how to find this? How to find VB? अगर नहीं दिया है तो I have told you how to find from this annexure, right? So annexure A. Clear everyone? If it is not given, then Yes. annexure A में से मिलेगा. चलो now coming to K1. चलो for K1, what is K1? K1 is known as risk coefficient. See, these all are the Viva question, that what is K1? K1 is the risk coefficient, right? Now risk coefficient you required to get value from table number 1, right? So this K1 you will get from table 1. चलो now all journal buildings and structures हम ये लेंगे. Probable life period we will consider 50 years of life period, and for K1 factor you require to have basic wind speed. This basic wind speed is 50, so our K1 value is 1. Is it clear to everyone? How to Yes. get Yes. value of K1? Okay, so K1 is 1. This is coefficient, so no unit. Then coming to K2. Coming to K2. Now K2 you can get from table number 2, right? K2 from table number 2. Chalo, now in this table number 2 what you required? You required height of the truss. What is our height of the truss? Height of the truss? 9 meter. Height of the truss? 12.5. Height 12.5, right? So here height of the truss is 12.5. Sorry. So 12.5 will rise between 10 and 15. Chalo, now here we will consider terrain category 3. Huh? For terrain category 3, so the value will be intermediate of this 0.91 and 0.97. And this is, I think, 12.5. Yes, 12.5. Chalo, interpolate karo and tell me the value. For 12.5 meter, what is K2? Quickly. 0.94. 0.94. Yes, ma'am. Yes, K2 is 0.94, correct. Right, so here I am writing 0.94. Inside I am writing that category 3 I have considered. Right, if it is not given in data, you can consider or you can assume any of the category. Now मैम next. एक बार ऊपर स्क्रॉल करशो स्टार्टिंग की. हाँ. Yes. ओके मैम. चलो, now K3. What is K3? K2 is for terrain category. K2 is for terrain category. Terrain category height.
coefficient. Now what is K3? K3 factor is topography factor. Right, K3 is topography factor. So whether your truss is above the slopy ground or not. Right, so if here it is mentioned, if the slope height of your ground is below the 3 degree or below the 3 degree, then K3 will be considered as 1. Right, and if the slope height is more than 3 degree, if this theta is more than 3 degree, then you require to get the value of K3 from annexure C. So in BTech level, we are not going into the calculation part of K3, but in master's level we are doing that if the slope height is more than 3 degree, then how to find K3 factor. If someone is interested, then just let me know. I will go through the K3 calculation also if the theta value is more than 3. But if your theta value is up to and including 3 degree, then K3 factor will be 1. So here I am assuming that our slope is less than 3 degree. So the K3 value will be 1. Clear everyone? Yes, ma'am. थीटा इज लेस देन 3 डिग्री. थीटा का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये है आपका ग्राउंड सरफेस, राइट, और ये है आपका ट्रस, यहाँ पे ये सेम ट्रस आपका है, राइट. तो यहाँ पे ये जो स्लोप है, this is called the theta angle, right? So here we have considered and K4 factor. Now what is K4 factor? K4 factor is for cyclonic effect, right? K4 factor is for cyclonic effect, right? So again we are considering that the cyclonic effect is not, because we are not nearby the coastal area where approximate the bed is 60 kilometer at the coastal, so we are not considering the effect of cyclone, so we will consider K4 factor as 1. But if you are nearby the coastal region, then you require to consider K4 factor like this, right, for this particular structure. Industrial structure 1.15, if you wish you can consider this also, and all other structure means 1. Clear everyone? So in future if you are doing the masters, then at least you know that how the K4 factor is given in IS 875 new code, right? So this is about K4 factor. Now we have all this value. Now we can easily find the VZ. Chalo, find out VZ. VB into K1 into K2 into K3 into K4. 47. 47 unit is meter per second. Wind speed meter per second. Right. So now we have this VZ. Now we can find PD, that is design pressure. So find out PD. PD is equal to 0.6 VZ square. 0.6 VZ square. 1325.4. 1325.4. 25.4. Chalo, what is unit of pressure? What is unit of pressure? Meter square per. This is wind pressure. This is Newton per meter square. Right, so if I convert into kilonewton, then that will be 1.325 kilonewton per meter square. Because we require all the force in terms of kilonewton,
That's why I have converted Newton into kilonewton, right? Chalo. So now we have this PD. So this part is finished. Now coming to this A. What is A? A is equal to sloping area of roof truss. So we require to find the sloping area of roof truss, right? That means we require to find this panel area. ये एक पैनल है तो ये पैनल का ये स्लोपिंग एरिया मुझे फाइंड करना है, राइट? So how to find how to find this panel area? See, we have in this figure that each this length is 1.25 meter, right? I required to find, that means this is 125. 1 minute. This, for this panel, this is 120, 1.25, 1.25 meter, right? So I required to find this length, AB length, स्लोपिंग लेंथ. यहाँ पे देखो ये पैनल लेंथ है मेरे पास, ये फिगर में 1.2 लिखा है, बट फॉर आवर केस दिस इज 1. इंस्टेड ऑफ 1.2 1.25 है. सो ये है लेंथ हमारे पास है, हमें ये स्लोपिंग लेंथ फाइंड करनी है. एंड स्लोपिंग लेंथ इनटू स्पेसिंग ऑफ ट्रस जो हमारा 6 मीटर है, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पैनल. इज इट क्लियर एवरीवन? यस. राइट. Yes, ma'am. तो हमें ये वो फाइंड करना है. चलो, तो कैसे फाइंड करेंगे हम? स्लोपिंग एरिया ऑफ रूफ ट्रस इज इक्वल टू, ऐसा है ये इंक्लाइन, तो ये लेंथ है हमारे पास, दिस इज 1.25 एंड दिस थीटा एंगल भी है हमारे पास, थीटा एंगल है, एंड वी रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस, क्योंकि ये पूरा यहाँ से एक्सटेंड होगा. और ये है मेरे पास स्पेसिंग ऑफ ट्रस 6 मीटर एंड आई वांट this much area. Chalo, can anyone tell me how to find this? Yes, ma'am. By using theta, first we find length and 6 into this length we get area. तो पहले हम स्लोपिंग लेंथ, चलो फाइंड कर लो पहले. स्लोपिंग लेंथ ऑफ पैनल क्या होगा? कॉस थीटा अप्लाई करें, Yes, ma'am. चेक करो. 1.25 डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगा. Ma'am, theta कितना? थीटा कितना है हमारा? आगे है हमारे पास, हमने आगे कैलकुलेशन किया, आगे कैलकुलेशन किया था जिसमें थीटा हमारे पास था 11.30 रूफ का स्लोप. 1.274. थीटा इज इक्वल टू 11.30, तो ये कितना मिला? 1.27 मीटर, 4. राइट. तो अभी फाइंड करो स्लोपिंग एरिया ऑफ रूफ ट्रस. Directly I can write
A is equal to 1.27 into 6. चलो कितना हुआ ये एरिया? 7.65. 6. 7.65 मीटर स्क्वायर। तो मुझे स्लोपिंग एरिया भी मिल गया जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई होगा। एनी डाउट एनीवन? No, ma'am. Right, so we have A, we have PD. Now coming to CPE and CPI. Now how to calculate CPE and CPI? Chalo. Now first we'll find the internal pressure coefficient. Are you all are writing in your notebook? Yes, ma'am. Huh? Yes. Each and every step you required to do. CPI. Now what about CPI? I have told that CPI is depend on how much your building or structure is having opening. कितना opening है उसके हिसाब से you required to consider the CPI value. So here I am considering that my opening is between 5% to 20%, right? This will be given by the client, or this will be considered to be for the type of the structure, whether which how many openings you require. Some chimney, some ventilator you required, some covering, then door, window. This all are said to be the opening. So how much openings are there in your truss, that is that will depend, and for that condition you require to find the CPI value. So if 5 to 20%, then the opening will be called as medium to large opening, and for that the CPI value is plus or minus 0.5. So here I am considering that openings between 5 to 20%. So CPI is equal to plus or minus 0.5. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Right, so this is plus or minus 5. Now coming to this calculation, that is the external pressure coefficient. That is CPE. External coefficient means CPE. Now how to do CPE calculation? Now here this is the close number. कौन सा था हमारा 7.3.2 इंटरनल प्रेशर के लिए क्लोज 7.3.2, right? And for this, for external pressure 7.3.3 and table number 6. I will share this note with you also, my PPT also. So at any time if you refer, or if you want to refer, you can get. Right, so now CPE value. For CPE value from table number 6, very first you required is H by W ratio. So first we will find H by W ratio. Right, now what is H of our building? H you require to consider from this. As per figure, if you can see, if you can see, write this. So H is from base to your top of your up means below your roof truss, right? So 9 meters. So H is 9 meter.
and W is spacing of truss. So what is spacing of truss given? 6 meter. ठीक है, spacing of truss ये देखो, W is this. सॉरी, spacing of truss तो क्या है हमारा 25 मीटर है ना, 6 मीटर नहीं है, 25 मीटर. चलो, so 25, W is 25, H is 0.36. 9 meter. Point 36. 36. Now H by W 0.36. तो लेस देन इक्वल टू 0.5 होगा फर्स्ट केस, 0.5 से कम है. Yes, ma'am. राइट, सो वी रिक्वायर टू सी दिस टेबल. ये टेबल देखना है. अभी ये टेबल में भी क्या है देखो, रूफ एंगल इज गिवन 0, 5, 10, 20, 30, 48, 60. आवर रूफ एंगल इज 11.30. हमारा रूफ एंगल कितना है 11 डिग्री, 11.30 डिग्री. सो दैट विल लाइज बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन. यहाँ पे हमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा फॉर 11.3. अभी यहाँ पे देखो विंड एंगल 90 डिग्री के लिए वी हैव दिस वैल्यू. इन दोनों का इंटरपोलेशन होगा EF साइड में, मतलब विंडवर्ड साइड में. लीवर्ड साइड में होगा ये, इसका इंटरपोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट -0.4. अगर थीटा डिग्री 90 है तो आपको ये दोनों के बीच में इंटरपोलेशन करना है 0.8 और 0.7 के बीच में. अगर लीवर साइड में है तो 0.8, 0.8. सो यहाँ पे भी करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, सो यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन टेबल वेर यू हैव दिस थीटा एंगल. 10 के लिए कौन सी वैल्यू है, ये 4. 20 के लिए ये 4 वैल्यू. And in between you require to do the interpolation for 11.30. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Right, so I have this table, so just I am copy paste from here. फिर पहले लिख देते हैं. हाँ बोलो मैम. H by W into 1/2 नहीं करना, उसमें तो दिया है. 1/2 नहीं करना है. अगर आपके डिजाइन के लिए आपकी H by W वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो ये Okay. टेबल में से वैल्यू लो. अगर 1/2 और 3/2 के बीच में है तो ये सेकंड टेबल में से वैल्यू लो. अगर 3/2 और 5 के बीच में है आपकी वैल्यू तो ये थर्ड टेबल में से वैल्यू लो. Yes, ma'am. Yes. हाँ, ऐसे करना है. H by W 1.5 नहीं, H by W हमारे जो भी ट्रस डिफरेंट ट्रस होगा, हर एक का ट्रस का हाइट डिफरेंट होता है, स्पेसिंग अलग होता है. तो उसके हिसाब से यू रिक्वायर टू टेक द वैल्यू. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो. सो दिस इज लेस देन 1/2. तो हमें वो टेबल 1 में से लेना है. सो आई हैव दिस टेबल विथ मी. सो जस्ट आई एम कॉपी पेस्टिंग ओवर हियर. Just go through this and check whether you find any difficulty or not. This way you require to write the value. See this. ये है हमारा H by W 0.36. 10 डिग्री के लिए विंडवर्ड साइड में देखो, विंडवर्ड साइड में -1.2 है, यहाँ पे -1.2. 20 डिग्री के लिए -0.4 है, -0.4. ठीक है, लीवर्ड साइड में -0.4, -0.4. तो यहाँ पे -0.4, -0.4 लिखा है. ठीक है, फिर विंड एंगल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ. यहाँ पे थोड़ा दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए. तो 90 डिग्री के लिए भी हम देखें तो विंडवर्ड साइड में -0.8, -0.7. तो देखो -0.8, -0.7. और लीवर्ड साइड में -0.8, -0.8. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0.7 आई एम राइटिंग 0.8. राइट,
भी क्या हो जाएगा 0.8। क्लियर एवरीवन? और उसके बाद इसका इंटरपोलेशन किया, वी आर नॉट गोइंग इनटू द इंटरपोलेशन। आई होप यू ऑल आर नोइंग दैट हाउ टू डू इंटरपोलेशन. So for this 11.3 degree, we require to do the calculation for theta is equal to 11.3 degree. Is it clear everyone? Just write down this data. So final value for 11.3 degree for theta is equal to 0, और यहाँ पे I am writing windward side and here I am writing leeward side. So for theta is equal to 0, this is minus 1.1. After interpolation, this is minus 0.4. And for theta is equal to 90 degree, for windward side, this is minus 0.79. This one is minus 0.8. Clear everyone? Yes. Yes. Right, so this way you require to do the interpolation. चलो, now we have all these 4 value. हमारे पास 4 वैल्यू है. अभी उसको हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द दिस फोर्स वैल्यू, राइट? तो वी विल फाइंड दिस फोर्स वैल्यू फॉर ऑल दिस CPE and CPI calculation. So again I have prepared one more table. This is the calculation part for the rest of calculation. देखो यहाँ पे विंड एंगल अभी मैंने 0 डिग्री कर लिया, 90 डिग्री, ऐसे ही मैंने टेबल बना दिया यहाँ पर भी, राइट? हियर दिस इज 0.8, दिस वन इज 0.8. ठीक है, चलो नाउ मेरे पास CPI है प्लस और माइनस 0.5, तो मैंने यहाँ पे प्लस 0.5 लिखा, यहाँ पे माइनस 0.5 लिखा. सो दिस इज माय प्रेशर कोएफिशिएंट. CPE की वैल्यू भी यहाँ पे है, विंडवर्ड लीवर्ड जो यहाँ पे हमने लिखा टेबल में, वही हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया. CPI भी है प्लस CPI माइनस CPI, 90 दोनों डिग्री के लिए सेम ही हो CPI होगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे लिख दिया. नाउ आई एम फाइंडिंग दिस टर्म CPE माइनस CPI. ये इक्वेशन में से ये जो CPI माइनस CPI है उसका एक कॉलम बना दिया, राइट? तो विंडवर्ड साइड में क्या होगा, माइनस 1.10 माइनस 0.5, सो माइनस 1.6 होगा. कैलकुलेट करो ये पूरा, ये टेबल कैलकुलेट करो. CPE माइनस CPI करना है, सो माइनस 1.10, ये प्लस 0.5 है लेकिन यहाँ पे माइनस यूज करना है, सो माइनस 1.10 माइनस 0.5, तो माइनस 1.6. ठीक है, CPI की 2 वैल्यू है तो दोनों के लिए आपको विंडवर्ड साइड में जाना है. अगेन माइनस 1.10 माइनस 0.5, तो प्लस 0.5 हो जाएगा. सो माइनस 1.10 प्लस 0.5, सो दिस विल गिव द माइनस 0.6. क्लियर हो रहा है आपको? Yes. 90 डिग्री के लिए भी कैसे होगा, माइनस 0.79 माइनस 0.5 करो, कितना होगा, माइनस 1.29. माइनस 0.79 प्लस 0.5, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. सो माइनस 0.79 प्लस 0.5, तो आपको मिलेगा 0.29. ये वैल्यू सही आ रही है, एक बार चेक कर लेना. सही है, माइनस 0.29. नाउ लीवर्ड साइड में क्या होगा, माइनस 0.4 माइनस 0.5, सो माइनस 0.9. देन माइनस 0.4 प्लस 0.5, सो 0.1. देन माइनस 0.80, इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज होगी, पॉइंट डिजिट का ही फर्क आएगा. माइनस 0.8
माइनस 0.5 क्या होगा, माइनस 1.3, तो यहाँ पे होगा माइनस 1.30 और माइनस 0.8 प्लस 0.5 तो वो हो जाएगा 0.30. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये देखो हमारा CP माइनस CPI ये जो था ये हमने कैलकुलेट किया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, 0 डिग्री के लिए भी, 90 डिग्री, विंडवर्ड डायरेक्शन एंड लीवर्ड डायरेक्शन. इज इट एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो. एनी कंफ्यूजन? क्विकली. No, ma'am. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Chalo. Okay. Now CP, CPI is over. Now A into PD. Now in that table itself, I have make one column for A into PD. What is our A? 7.65. And what is our PD? 1.325. चलो करो 7.65 into 1.325 कितना आ रहा है? 10.14. 10.14. So I have written 10.14 everywhere. Clear? मैम Now एक we बार require रिपीट करो नहीं ये पीडी. APD. चलो, what is APD? In this equation, A is my sloping area. So I have slope area 7.65 हमने यहाँ पे find किया है. Sloping area 7.65. And PD is the design pressure. वो भी हमारे पास है 1.325. So 1.325 into 7.65. Yes, इफ ma'am. यू कैलकुलेट यू विल गेट 10.1. तो यहाँ पे हर एक जगह पे हमें 10.1 लिखना है क्योंकि यहाँ पे दो दो वैल्यू है, 0 के लिए भी दो वैल्यू, 90 के लिए भी दो वैल्यू, तो APD विल बी कॉमन फॉर ऑल. ठीक है. नाउ वी रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस इक्वेशन. व्हाट इज आवर फोर्स इक्वेशन? फोर्स इज इक्वल टू CPE minus CPI into A into PD. We have this value also, we have combined value of A into PD also. So now the last column for windward direction, अगर आप 10.1 into minus 1.6 करोगे you will get this minus 16.2. चेक करो. I can write over here this. Yes. You can find F is equal to CPE minus CPI into A into PD. ठीक है. तो ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट 0 के लिए भी, 90 डिग्री के लिए भी, विंडवर्ड डायरेक्शन, लीवर्ड डायरेक्शन. फाइन. Yes, ma'am. Right, now we have all four value as I discussed earlier that we required to take the critical value. हमें यहाँ पे ये सब वैल्यू की जरूरत नहीं. देखो 0 डिग्री में माइनस 16.2 भी है, माइनस 6.1 भी है, तो व्हाट इज मैक्सिमम? माइनस 16.2. मतलब हम डिजाइन किसके लिए करेंगे, एनालिसिस किसके लिए करेंगे? जो हायर है उसके लिए. लोअर तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा. राइट. सो इन दिस विंडवर्ड डायरेक्शन इफ यू सी 0 डिग्री एंड 90 डिग्री the maximum load or maximum force will be minus 16.2. Clear everyone? और अगर लीवर Yes. डायरेक्शन में देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री तो मैक्सिमम फोर्स का कितना है? minus 13.0. राइट. तो दिस टू वैल्यू विल बी अवर क्रिटिकल वैल्यू फॉर द एनालिसिस पर्पज और क्रिटिकल फोर्स ऑन द ट्रस. वेदर इट इज 0 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन विंडवर्ड में मैक्सिमम फोर्स 16.2 है और लीवर डायरेक्शन में 13 है, माइनस 13 है. क्लियर? Yes, ma'am. राइट. Yes. सो एट लास्ट वी रिक्वायर टू राइट दिस टेबल, और इफ यू विश you can directly write it also, that critical wind load, right,
0 डिग्री के लिए -16.2, 90 डिग्री के लिए -13, ये दो वैल्यू। एंड ओवर हियर एंड ओवर हियर, राइट। चलो अभी ये क्या लिखा है, नाउ वी हैव द फोर्स वैल्यू। हमारे पास फोर्स है कि विंडवर्ड साइड में W3 कितना है मेरा, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू लेती हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू है मेरा 16.2, ठीक है यहाँ पे। और लीवर साइड में कितना है -13। तो मुझे फोर्स मिल गया दैट इफ दिस इज माय ट्रस एंड इफ दिस आर द विंड लोड ऑन ईच एंड एवरी, ये 90 डिग्री पे लेना है, ईच एंड एवरी नोडल पॉइंट, like this, how many of the members you can write. Then this is called the end node, जो एंड में होता है वो, एंड दिस वन इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट नोड, राइट। तो मुझे जो फोर्स मिला है विंडवर्ड डायरेक्शन में कितना है 16.2, तो दिस ऑल आर माय 16.2, दिस इज 16.2, ऑल इंटरमीडिएट विल बी 16.2। एंड नोड कितना होता है, हमने लाइव लोड डेड लोड में भी देखा है, व्हाट इज एंड नोड, हाफ ऑफ द इंटरमीडिएट, तो 16.2 का हाफ क्या होगा 8.1, so this is 8.1 over here and over here. For this also 8.1. Now for this is, suppose this is the wind direction, right? So this is windward direction और leeward direction. Leeward direction में कितना है -13, so this will be 13, और ये कितना होगा उसका हाफ, तो 6.5, over also 6.5. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Right, so this Yes. we have taken the maximum value from 0 to 90 degree. अगर एक्यूरेट डिजाइन करना है, एक्यूरेट एनालिसिस करना है, तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू लो विंडवर्ड डायरेक्शन में, लीवर डायरेक्शन में 9.1 लो, उसके लिए एनालिसिस करो, उसके लिए फोर्स फाइंड करो, मेंबर फोर्स 90 डिग्री लो, उसके लिए फाइंड करो, और जो मैक्सिमम फोर्स आता है मेंबर पे, उसके लिए आप वो मेंबर की डिजाइन करो, राइट। Or else you can consider the maximum value from 0 to 90 degree for the windward direction and same way for the leeward direction, ठीक है। तो windward direction के लिए W3 नाम दिया है फोर्स का, leeward direction के लिए W4 दिया है। आगे अगर देखा होगा तो आगे हमने डेड लोड के लिए W1 लिया था, लाइव लोड के लिए W2 लिया था, W3 is for windward direction and W4 is for leeward direction. So this way you can get the calculation for the wind forces. Calculation for the wind forces. So here I have written, say this. And all x perpendicular to node. Chalo, any doubt? No, ma'am. Clear how to do the wind load calculation? This is very important, huh? Wind load calculation on truss. ठीक है, अभी we have dead load, we have live load, we have wind load. So this will be the total load calculation or the diagram that we require to do before the analysis. See this. This is dead load W1 acting vertically downward,
W2 is live load, again acting vertically downward, and wind load perpendicular to nose. So W3 at the windward side, W4 at the leeward side. Clear everyone? Yes. Right. Now what we require to do, ये हमें हमारे पास simple load मिल गया. We have dead load, live load, wind load. Now the code has given the different load combinations. If you remember, at the time of beam, I have shown you the load combinations which are given in IS 456. So IS 456 has given the load combination that all the load will not come at a time, or you cannot consider that only dead load and live load will come and wind load will not come, or only wind load will come and dead load and live load will not come, right? So what we require to do is we require to go for the load combination, and whichever load combination will give the maximum forces in the member, for that maximum forces we require to do the design part, right? तो अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, we will do the load combination, or we will see that which are the load combinations available, and applying that load combination you require to draw a single figure where downward force and perpendicular force both will act. You require to do the calculation by or analysis by method of joint or method of section, and by doing the method of joint and method of section you require to find the forces in each and every member. ये सभी मेंबर में कितना फोर्स आएगा वो हमें फाइंड करना है. क्लियर एवरीवन? ये सब मेंबर का फोर्स फाइंड करना है एनालिसिस थ्रू. आई एम नॉट गोइंग टू डू द एनालिसिस पार्ट, दैट विल बी द सेल्फ स्टडी, दैट विल बी द सेल्फ लर्निंग. ऑलरेडी यू हैव done in your first year that how to do method of section and method of joint to find the truss forces, right? So we'll do, I will explain you how the load combinations will be applied, and after that you require to do the analysis, and then after we can do the design part of each and every member. तो हमें वो देखना है कि एनालिसिस में आपको क्या मिला है, टेंशन फोर्स आ रहा है या कंप्रेशन फोर्स. इफ यू रिमेंबर, आप जब मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट करते थे तो आपको नेगेटिव मिलता था तो आप उसको टेंशन लिखते थे, पॉजिटिव मिलता था तो कंप्रेशन लिखते थे. आर यू रिमेंबर? मतलब दैट इज डिपेंड ऑन कि आपने इनिशियली ये साइन अज्यूम किया है, तो ये साइन किसका है, कंप्रेशन और टेंशन का. ये साइन, दिस इज फॉर कंप्रेशन एंड दिस इज फॉर टेंशन. अगर कंप्रेशन से आपने एनालिसिस स्टार्ट किया, पॉजिटिव आया मतलब आपने जो इनिशियली स्ट्रेस अज्यूम किया है कि कंप्रेशन है तो करेक्ट है, नहीं है तो वो टेंशन में आ जाएगा, मतलब माइनस होगा, राइट? सेम वे फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन. सो दिस वे यू कैन गेट, एंड विच एवर मेंबर यू आर गेटिंग फॉर टेंशन फोर्स उसकी डिज़ाइन आपको टेंशन की तरीके करनी है. विच एवर मेंबर यू आर फेसिंग विच आर हैविंग कंप्रेसिव फोर्स उसके लिए आपको कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन करनी है. और टेंशन मेंबर डिज़ाइन एंड कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन ऑलरेडी इज डन in your class, and this all design tension compression connect along with connection design. So welded connection, bolted connection, welded connection तो at least हो गया है, so you can do the connection of tension member and compression member. ठीक है? मैम एक प्रॉब्लम है. बोलो. मैम ये क्रिटिकल विंड लोड में से कौन सा लोड लेना है, विंडवर्ड और लीववर्ड डायरेक्शन में? हाँ, वो कैसा पता चलेगा यही लोड लेना है? जो मैक्सिमम हो वो ले लेने का? हाँ, 0 और 90 डिग्री में जो मैक्सिमम है वो ले लेने का. ओके मैम. और लीवर्ड में भी मैक्सिमम जो है 0 और 90 डिग्री में वो, मतलब हियर 16.2 एंड हियर 13. सो आई हैव रिटन, देखो W3 is 16, W4 is 13. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, चलो. So we are ending this session. In next lecture we will do the load combination and the further analysis कैसे करते हैं. I will not explain analysis कैसे करते हैं, but I will show you the answer of this particular
truss, and we'll explain how to do. And then after we will start with the purlin design.